ठीक है. First, on first sheet write down some basic informations. Basic informations like content part first in introductory macro. Remember semester 1 was introductory micro, so second semester is all about macro. In third semester you will be studying micro and macro both, and the level will become intermediate rather than introductory. So first year is introductory, micro and macro separately in different semester. In semester 3 as well as in semester 4, in both semester you have to study micro and macro both, and the level will become intermediate. In third year it will become more advanced. So introductory is first year, intermediate is second year, and advanced will be the final year. In this introductory macro, topic wise unit number 1 is introduction to national income accounting and balance of payment. Introduction to national income accounting and balance of payment, unit number 1. Then unit number 2, concept related to money. Unit number 3 will be inflation. Club that 2 and 3 as one. So read it as money and inflation. So money and inflation is unit number 2 and unit number 3. And unit number 4 is closed economy. Closed economy in short run. Closed economy in short run. Popularly it will be referred as ISLM model unit or ISLM unit. I will explain what is IS and what is LM. Unit number 4 will be ISLM or closed economy in short run. So 4 unit in content: introduction to national income accounting and introduction to balance of payment, concept related to money, quantity theory of money. Third topic will be inflation, and fourth topic is closed economy in the short run. Now out of these 4, the paper pattern, question pattern, ठीक है. Last 4-5 year में there slight difference is there. Last year there was in total 7 question, you have to attempt any 5. So 5 out of 7. ठीक है. माइक्रो में जैसा स्ट्रक्चर था 5 आउट ऑफ 7 का फॉर्म यहाँ अटेम्प्ट करना है. बट उससे पहले वाले अगर क्वेश्चन देखते हैं 2017 के 16 के, इन दैट पैटर्न देयर वर 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, एंड ऑल 3 वर कंपल्सरी. तो सिलेबस में डिफाइन नहीं किया जाता है कि एग्जैक्टली पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या होगा. तो देयर कुड बी 7 क्वेश्चन, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5. जो लास्ट ईयर का पैटर्न था उससे पुराने वाले क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 3 क्वेश्चन है, ऑल 3 वर कंपल्सरी. फर्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम फर्स्ट यूनिट, second question was from unit 2 and 3, money and inflation, and that third question was from unit number 4. But in that weightage was for first unit 15 marks, second unit and third unit combined 25, and unit number 4 alone 35. So you can say 50% of the content is in unit number 4. 50% content unit number 4 के अंदर है. 50% कंटेंट यूनिट नंबर 4 में. नाउ इन यूनिट नंबर 4 और 2 फॉर्म के सिलेबस अभी तक, जैसे एक साइड पे डीयू के साइड पे जो सिलेबस है इंट्रोडक्टरी मैक्रो, दैट इंट्रोडक्टरी मैक्रो यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग इंक्लूडिंग दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसेप्ट. यूनिट नंबर 2 इज मनी, यूनिट नंबर 3 इज inflation, and fourth unit is closed economy in short-term classical and Keynesian system. Popularly it will be referred as
ISLM मॉडल। और यहाँ पे रेफरेंसेस गिवन है एबल, ब्लैंचार्ड, डॉनबुश, जोन्स एंड मैनक्यू। ठीक है, दीज आर द रेफरेंसेस। बट ये डीयू के साइड पे जो सिलेबस है उसमें किस यूनिट का कौन सा रेफरेंस है वो अभी एक्सप्लेन नहीं हो रहा। ठीक है, ये तो कलेक्टिवली सिलेबस के लास्ट में रेफरेंसेस दे दिए। अभी तक जो रेफरेंसेस हैं उस रेफरेंसेस में जो रीडिंग अगर आप बाई कर रहे हैं तो जो एसएससी या डी स्कूल से जो मिल रहा है उसमें यूनिट नंबर 1, अब ये जो आप रीडिंग बाई कर रहे हैं वो है, पर रीडिंग में क्लियरली याद रखिएगा ये डेट, ठीक है, ये 18 के अकॉर्डिंगली। उसके बाद फर्दर एक्चुअल में कोई मीटिंग हुई नहीं है तो मोस्टली ये सेम रहना चाहिए, बट स्टिल फर्स्ट यूनिट इज इंट्रोडक्शन टू मैक्रो एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग। फॉर दैट पर्पस उसके नीचे रेफरेंसेस गिवन है कि दीज आर द रेफरेंसेस फॉर यूनिट नंबर 1। सिमिलरली यूनिट नंबर 2 and 3 मैनक्यू एंड ब्लैंचार्ड, यूनिट नंबर 3 अगेन मैनक्यू एंड ब्लैंचार्ड, and fourth unit is मैनक्यू एंड डॉनबुश एंड फिशर एंड स्टार्च, DFS शॉर्ट में इसके। फोर्थ यूनिट इज मैनक्यू एंड डॉनबुश। बट इस लिस्ट में और जो डीयू के साइट पे अवेलेबल है उसमें एक डिफरेंस है बस, एंड दैट डिफरेंस इज दिस फोर्थ वन, जोन्स। ठीक है, वो ओल्ड वाले सिलेबस में नहीं है, बट अभी ये क्लियर नहीं है कि जोन्स की रीडिंग किसको रिप्लेस कर रही है या एडिशन में हो रहा है या उससे कौन से चैप्टर पढ़ने। ठीक है, बट अगर होगा भी तो वो मोस्ट प्रोबेबली यूनिट नंबर 4 मैनक्यू वाला कंटेंट में भी रिप्लेस करे या ऐड ऑन करे, क्योंकि मैनक्यू अभी भी इसके अंदर भी है तो ऑलमोस्ट जितने कंटेंट है वो तो एज इट इज रह जाएंगे, मे बी वन मोर चैप्टर एडेड। सो वंस इट विल बिकम क्लियर देन वी विल ऐड दैट। नाउ गिवन दैट सिंस वेटेज फॉर यूनिट नंबर 4 इज हाईएस्ट, मतलब 35 मार्क्स का वेटेज है यूनिट नंबर 4 का, सो आई विल टेक द फर्स्ट वन एज क्लोज्ड इकोनॉमी इन शॉर्ट रन ISLM मॉडल के फॉर्म में, यूनिट नंबर 4। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, रिमेंबर इन मैक्रो इकोनॉमिक्स we divide entire macro broadly into two parts. One is a classical and other is Keynesian. Classical and Keynesian. Classical approach and Keynesian approach, these are two different school of thought in macro. You can say these are two different principles. One group of thought known as classical जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के ड्रॉबैक को केन्स ने पॉइंट आउट किया और केन्स के जो फॉलोअर है दे आर नोन एज केनीशियन। नाउअडेज जो इकोनॉमी जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, सम ऑफ देम फॉलो क्लासिकल बट दे मॉडिफाई क्लासिकल, सम फॉलो केन्स बट दे आल्सो मॉडिफाई केन्स आल्सो। सो नाउअडेज द इकोनॉमिस्ट्स आर बेसिकली नियो क्लासिकल और नियो Keynesian. You can call them post classical, post Keynesian also. बट पोस्ट वाली बात सेमेस्टर 2 के अंदर नहीं आनी है। ये इंट्रोडक्टरी मैक्रो यहाँ पे सिर्फ कहाँ तक लिमिट करना है, ओल्ड क्लासिकल इकोनॉमिक्स एंड दी Keynesian economics. Just remember whenever I say classical economics, they all principle of classical economics will hold true in a long run. It will hold true in long run and Keynesian argument will hold true in short run. Just for example, if I say that why GDP of India in 2019-20 is more as compared to what it used to be in 1951. So why GDP has increased over a period of time? So what could be the reason for it? एक दो रीजन बताओ जिसकी वजह से इंडिया का जीडीपी 2019-20 का हायर है एज कम्पेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू बी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. Why we are able to produce more of output? We are able to produce more of output because there is more stock of plant and machinery, more labor, their efficiency has increased. So output, that is Y, is basically a function of stock of capital, stock of labor, technology. So over a period of time those resources has increased and therefore economy is in a position to produce
more of output. Now if I say why output in 2019-20 is lower as compared to 18-19, करंट ईयर में स्लो डाउन है इकोनॉमी के अंदर, तो अगर स्लो डाउन है मतलब प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन है भाई? प्रोडक्शन इज लेस। क्या स्टॉक ऑफ मशीनरी घट गई है? क्या स्टॉक ऑफ लेबर डिक्रीज हो गया है? क्या टेक्नोलॉजी डिक्रीज हो गई है? नन ऑफ देम। सो व्हाई प्रोडक्शन इज लेस? Production is less in current year because there is lack of demand. In response of lower demand, there is lower production. But just make difference. And here I am saying 1951 को 2020 से कंपेयर किया मैंने, और वहां मैं कंपेयर कर रहा हूँ 2020 को 2019 से, तो वो मेरा शॉर्ट रन व्यू है। तो इन द शॉर्ट रन वी विल से दैट आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय एग्रीगेट डिमांड, और जहां जहां वाई लिखेंगे मैक्रो में, इसका मतलब आउटपुट, और आउटपुट को आप सिंपल फॉर्म में रखें, ये जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये इकोनॉमी का डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। सो दैट डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड बाय कैपिटल एंड लेबर, बट दैट डोमेस्टिक प्रोडक्शन डिटरमाइंड बाय कैपिटल एंड लेबर इज अ क्लासिकल कंसेप्ट, एंड दैट डोमेस्टिक आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय एग्रीगेट डिमांड इज अ केनेशियन कंसेप्ट। तो शॉर्ट रन में विच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट? डिमांड। लॉन्ग रन में कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है? कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। तो आपको ये दोनों ही पढ़ना है, बट यूनिट की हेडिंग क्या है? फोर्थ यूनिट की हेडिंग क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी इन, अंडरलाइन दैट वर्ड, शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन मीन्स व्हाट वी हैव टू एक्सप्लेन मेनली केनेशियन कंसेप्ट। सो बेसिकली वी आर स्टडीइंग केनेशियन हियर। क्लासिकल भी पढ़ेंगे बट ज्यादातर कंटेंट केनेशियन का होगा। वी आर एक्सप्लेनिंग क्लोज्ड इकोनॉमी इन दी short run. So short run में we have to follow that Keynesian argument mode. So we are following basically Keynesian argument mode. Clear? कौन सा सही है कौन सा गलत है इस पे भी दिमाग नहीं लगाइएगा कि ये सही है ये गलत है। Both are correct, but one is long run approach, other is short run approach. These are two different perspectives. We are looking economy from two different angles. One from the long run point of view, other from the short run point of view. There is no contradiction. So we'll basically start with that short run, but so focus will be basically here on short run. Second thing, when we study economy, then divide that economy into three parts, or you can say economy basically consists of three important markets. Economy consists of three important markets. One is product market, you can call it goods market. Other will be money market, you may call it financial market. Third is factor market, within factor market it is labor market. Product market, money market and labor market. Product market equilibrium will require that income must be equal to spending. Product market equilibrium will require that income must be equal to spending. Income must be equal to spending. And if I say income in macro, income is basically here domestic income. लिखते समय आप इसे डायरेक्टली वाई से डिनोट कर देंगे, और स्पेंडिंग का मतलब कंजम्पशन स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, द सम ऑफ ऑल स्पेंडिंग इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। तो पढ़ रहे हैं केनेशियन मॉडल, तो हमने क्या लिख दिया? वाई इक्वल टू, इक्वेशन लिखते समय वाई इक्वल टू एडी लिखो, बट कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हमने इसको क्या लिखा है? इनकम, और ये स्पेंडिंग है, स्पेंडिंग डिमांड है, और ये प्रोडक्शन है। नाउ इनकम इज इक्वल टू स्पेंडिंग, इफ आई अंडरलाइन दैट फर्स्ट लेटर, देन इनकम by I, spending by S. So if I say IS curve, so on IS curve what is equal? Income equal to spending है, and if income is equal to spending, then which market will be in equilibrium? Goods market is equilibrium. So IS curve represent
goods market equilibrium. So we have to explain in detail. IS का basically represent what? I for income, S for spending. Don't confuse with saving and investment. I is here income and S for spending. So when income is equal to spending, there is goods market equilibrium. Clear? Then after explaining that goods market, we will move to money market. Money market equilibrium will require what? Money market equilibrium will require that money demand must be equal to money supply. Money demand must be equal to money supply. Money demand in macro is technically called liquidity preference. We call money demand as liquidity preference. What is the meaning of liquidity preference? Liquidity preference means we prefer to keep liquid asset. We means public. Public prefer to keep liquid asset. And what is most liquid asset? Cash. So money demand is nothing but demand for cash. Money demand is a demand for cash. But technically क्या बोलना है उसको आपको? Liquidity preference कहिएगा. Money demand is liquidity preference. And that liquidity preference will be equated with money supply. Who supplies money in the economy? Central bank. So central bank is supplying money in the economy, and who is demanding that money? Public, that is household, firm, government, they require money. Now underline this first letter L here and M here. So if I say LM curve, then L for liquidity preference, and liquidity preference is money demand. M for money supply. So when along LM curve, what is equal? Liquidity preference is equal to money supply, which means money demand equal to money supply, and therefore we have money market equilibrium. So along LM curve, which market is in equilibrium? Money market. Along IS curve, goods market. Product market equilibrium है. आपको ये अलग अलग पहले पढ़ना है. Goods market equilibrium will be plotted by IS curve. Money market equilibrium will be by LM curve. When both market will be in equilibrium, so both market equilibrium will be determined by intersection of IS and LM curve. From that both market equilibrium in macro we will derive aggregate demand, and from labor market we will derive aggregate supply. That means labor market equilibrium will be plotted by aggregate supply. So where AD and AS intersect, how many market will be in equilibrium? Where AD and AS intersect, along AD which market equilibrium? Both. And along AS, labor market. So where AD and AS will cross, then all three market will be in equilibrium. In that way they will be equilibrium of economy. So before explaining or understanding economy, we have to understand economy from different sector wise, product wise, then money market and then labor market. अब ये पूरी मैक्रो आपको सेमेस्टर 2 में नहीं पढ़नी है. मैंने आपको एक फ्रेम क्रिएट करके दिया है जिसको आपको सेमेस्टर 3-4 तक लेके जाना है. आप स्टार्ट कर रहे हो सेमेस्टर 2 से. We will end here in semester 2. Semester 2 will end where ISLM goes. This AD and AS will be the first unit in semester 3. But जब first unit semester 3 का start होगा AD AS का, so before deriving that AD you must know what? ISNL. So that ISLM will continue in semester 3. ठीक है, यहाँ वो end हो रहा है unit 4 से, semester 3 के अंदर वहाँ से वो start हो जाएगा. जहाँ से आप end करेंगे उसके बाद वाले chapter होंगे. तो in semester 2 we will limit ourselves to only IS curve and LM curve. We are limiting to only IS curve and LM curve. Clear है? तो एक फ्रेम क्लियर है कि इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन गुड्स मार्केट, मनी मार्केट एंड लेबर मार्केट, all three market will be in equilibrium. So when all three market will be in equilibrium, then only we can say that economy is in equilibrium. तो right now अभी कोई आप कमेंट नहीं करना है कि इकोनॉमी में क्या, unless we do not know the entire picture. So entire picture will include all three market: product market, money market and labor market. So first we will be explaining the product one, and then you can now write this. In that context you can start with unit number 4, which is
closed economy in short run. Closed economy in short run. ठीक है, from for that purpose the reference book Dornbusch and Fisher and Starch, शॉर्ट में से DFS लिख. चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 and chapter number 11 within 11.1 to 11.3. 11.1 to 11.3. Chapter number 9 will be income and spending. Heading for chapter number 9 will be income and spending. Chapter number 10 will be money, interest and income. Money, interest and income. So this first chapter will be focusing only on which market? Only on goods market. The next chapter will be focusing on money market. And then chapter number 11 is a monetary policy and fiscal policy. But it is not complete 11, it is 11.1, 11.2 and 11.3. This will be the main content here in that unit number 4. And अब मैं जो लिख रहा हूँ उसमें chapter number 3 and chapter number 10. Chapter number 3 and 10 as per Manque. चैप्टर नंबर 3 and 10 मैनक्यू. बहुत ओल्ड सिलेबस में जाएंगे तो जो क्लासिकल मॉडल है वो फ्रॉयन से पढ़ते थे, बट फ्रॉयन की रीडिंग अब नहीं है. तो चैप्टर नंबर 3 and 10 फ्रॉम मैनक्यू. एंड इन केस जो ड्यू वाले साइट पे अवेलेबल है उसमें अगर जोन्स की रीडिंग होगी तो मे बी दिस कुड बी एडेड इन यूनिट नंबर 4. ठीक है, 4 के अंदर वो कंटेंट आ सकता है. तो जहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है वी विल बी स्टार्टिंग विद दैट. मतलब देयर इज नो कंफ्यूजन इन डॉर्बुश एंड फिशर. ठीक है, दैट रीडिंग विल बी देयर. इसमें भी ये जो चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 है, इफ यू हैव सम ओल्ड बुक, ओल्ड एडिशन, इन दैट इट विल बी चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5. ठीक है, चैप्टर नंबर 3 इनकम एंड स्पेंडिंग, चैप्टर 4 मनी इंटरेस्ट एंड इनकम एंड चैप्टर 5 मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी. नो चेंज इन एडिशन. चैप्टर का पोजीशनिंग अलग है बस. तो नई रीडिंग के अंदर न्यू वर्जन में ये चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 है. ओल्ड में इट यूज्ड टू बी चैप्टर नंबर 3, 4 and 5. Clear? So this is the content for unit number 4 with a weightage of approximately 35 marks. Weightage of approximately 35 marks. ठीक है, make this heading. Chapter number 9, income and spending. First chapter now. Income and spending. Income and spending. So when we say income and spending, basically we are discussing goods market. So here we have to calculate equilibrium level of income. और अप्रोच यहाँ भी याद रखिएगा, न्यूमेरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव बोथ है. So there will be many numerical as well. To calculate equilibrium level of income, we are equating income with spending. We are equating income with spending. Income with spending. Now answer one thing. Which spending it is? Is it spending by domestic resident or is it spending on domestic good? Both will sound similar. The answer is no. Is income equal to spending by domestic resident or is income equal to spending on domestic good? It is spending on domestic good because
When we say here income, income means here we are measuring what? Y, and I said Y stands for gross domestic product. ये domestic product है, तो फिर that domestic product must be equal to what? Spending on domestic product or spending on domestic good. Now answer, who will spend on our domestic product? Suppose इंडिया के domestic product की बात कर रहे हैं, तो उस इंडिया में जो domestic good produce हुआ उसको किसने बाई किया है? Who is buying that domestic product? जो बाई कर रहा है भाई डिमांड कर रहा है, भाई एग्रीगेट डिमांड होगा. So who is buying that domestic product? हाउसहोल्ड ने बाई किया होगा, फॉर्म्स ने बाई किया होगा, मशीन, गवर्नमेंट ने बाई किया होगा, फॉरेनर्स ने भी बाई किया होगा. बट एज अ हाउसहोल्ड क्या सिर्फ हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही बाई करते हैं? वी ऑल्सो बाई चाइनीज प्रोडक्ट. बट यहां पे मुझे लिखना क्या है? स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिक गुड. सो आई एम जस्ट राइटिंग फॉर कंसेप्ट क्लैरिटी, दिस इज कंजम्पशन स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिक गुड. पावर नहीं है वो. दिस इज इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिक गुड, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिक गुड. एंड हु एल्स विल बाय डोमेस्टिक गुड? फॉरेनर्स. बट फॉरेनर्स ने अगर इंडियन गुड्स बाई किया तो उसको हम क्या कह सकते हैं? एक्सपोर्ट हो गया वो. सो प्लस एक्सपोर्ट. नाउ एज अ डोमेस्टिक रेजिडेंट आवर स्पेंडिंग इंक्लूड परचेज ऑफ डोमेस्टिक गुड एज वेल एज परचेज ऑफ फॉरेन गुड्स. हमारे स्पेंडिंग में डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों इंक्लूडेड होता है. बट मैंने यहां पे लिखा क्या है? डोमेस्टिक लिखा. सो इन प्लेस ऑफ दिस सी डी व्हाट यू कैन राइट, वहां से फॉर्मूला निकलेगा. टोटल जो कंजम्पशन है उसमें से क्या माइनस कर दिया? सी एफ माइनस कर दिया. सो इन प्लेस ऑफ दैट सी डी यू कैन राइट सी माइनस सी एफ. सिमिलरली इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग विल ऑल्सो इंक्लूड परचेज ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन गुड. So in place of ID what you can write? I minus IF, and in place of G, D, G minus GF plus export. Clear? So can I write this as C plus I plus G plus X minus? Subtract all minus here. Minus term कौन कौन से हो गए? CF, IF और GF. So minus CF माइनस आई एफ माइनस डी एफ, कलेक्टिवली अगर माइनस कर ले तो ये प्लस हो गया. और इस पूरे टर्म को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? एनी परचेज ऑफ फॉरेन गुड बी इट बाय हाउस होल्ड और बाय फर्म और बाय गवर्नमेंट विल बी कॉल्ड एज इंपोर्ट. ठीक है, तो इस कंप्लीट नंबर की जगह क्या लिख दीजिएगा? इंपोर्ट लिख देंगे. तो इक्वेशन क्या बना हमारा? y इक्वल टू व्हाट? c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. ठीक है, so you write equation as y equal to c plus I plus g plus x minus m. So what is actually c plus I plus g plus x minus m stands for? ये जो लिखा है ये किसकी जगह लिखा है हमने? स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिक गुड लिखा है. तो स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिक गुड डिटरमाइन डोमेस्टिक इनकम. So y is equal to c plus I plus g plus x minus m. Clear? Why you have subtracted import? तो क्या कहीं हमने उसको इंक्लूड कर लिया था कि सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ी है? हमने सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ पे इंपोर्ट माइनस में लिखा है, तो क्या कहीं ऐड कर लिया जिसकी वजह से उसको सब्ट्रैक्ट किया गया था? यस, एडेड हो गया. वो कहाँ पे ऐड हो गया? वो सी में ऐड हो गया था, आई में भी ऐड हो गया, जी में भी ऐड हो गया. तो ऐड नहीं करना था बट हमने उसको ऐड कर लिया है, तभी हमने उसको लास्ट में क्या कर दिया? इंपोर्ट के फॉर्म में सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो जीडीपी ऑफ इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाई C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. अगर आपने 12th लेवल पे इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है तो ये एक्सपेंडिचर मेथड है. जब नेशनल इनकम पढ़ाएंगे तो वहाँ अलग अलग मेथड आ जाएंगे. तो एक्सपेंडिचर मेथड का ये फॉर्मूला है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट डिटरमाइन द जीडीपी ऑफ इकोनॉमी. तो इस कंसेप्ट को यहाँ पे फॉलो करना है, बिकॉज वी आर स्टडिंग केनीशियन मॉडल, एंड इन दैट केनीशियन मॉडल y इज इक्वल टू AD, एंड दीज आर द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. क्लियर? Now divide all component of aggregate demand into two part. इसके नीचे से फॉर्मूला लिखते जाना. ये जो एग्रीगेट डिमांड लिखा है इसको मैंने दो पार्ट में भी डिवाइड किया. All component here can be broadly categorized into two part, autonomous and induced. So autonomous and induced, right?
Autonomous and induced. Autonomous and induced. So it is autonomous spending, induced spending. And what is the meaning of word autonomous? Autonomous means what? Independent. Autonomous मतलब independent है. So independent from what? Independent from income. So if any spending is independent from income, you have to call it autonomous. And if it depends on income, you will call it induced. सिर्फ इनकम पे ध्यान देने का, किसी नए वेरिएबल को ऐड नहीं करना भी है. अगर कोई स्पेंडिंग इनकम का फंक्शन है तो उसको इंड्यूस कहेंगे, अगर वो इनकम से इंडिपेंडेंट है तो ऑटोनॉमस कहेंगे. जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8y, ध्यान से इक्वेशन को देखिएगा. कंजम्पशन का फंक्शन लिखा है 100 प्लस 0.8y. इन दैट फंक्शन इफ इनकम इज 0 देन हाउ मच इज कंजम्पशन? y 0 करेंगे तो C की वैल्यू 100 आ जाएगी. इनकम 0 होने पे कौन सा कंजम्पशन रहेगा? ऑटोनॉमस बचेगा, तो वो 100 ऑटोनॉमस है और 0.8y इंड्यूस्ड है. 0.8y इंड्यूस्ड है. तो इक्वेशन को लिखने का फॉर्म ये हो गया, हमने कंजम्पशन को के दो कंपोनेंट कर लिए. वन पार्ट इज ऑटोनॉमस, अदर पार्ट इज इंड्यूस्ड. नाउ इसे जनरल टर्म में ऐसे लिखा जाएगा, C इज इक्वल टू द टर्म ऑटोनॉमस विल बी डिनोटेड बाय दैट बार साइन. तो C बार को क्या रीड करना है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन. I बार लिखें तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. G बार लिखा है ऑटोनॉमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. T बार लिखें ऑटोनॉमस टैक्स. ठीक है, तो जहां बार का साइन लगाएंगे उसको क्या रीड करेंगे? ऑटोनॉमस. ये 0.8, 0.7 या 0.2 उसकी जगह लिखिए स्मॉल c इंटू वाई. स्मॉल c इंटू वाई, एंड दैट स्मॉल c विल बी इंटरप्रेटेड एज marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume. Marginal means additional, propensity means tendency. Marginal propensity to consume means additional consumption due to additional income. Additional consumption due to additional income. How to write it? Additional consumption I said, so change in consumption due to change in income, and its value will always be between 0 and 1. The value of MPC will be between 0 and 1. तो यहाँ जितने भी इक्वेशन लिखे गए मैं एक एक करके इक्वेशन लिखूंगा. ये कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है. इस कंजम्पशन के लिए अब आपने ये इक्वेशन बना लिया. ठीक है, कंजम्पशन इज इक्वल टू C बार प्लस स्मॉल c y. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टर्म इज इन्वेस्टमेंट, आफ्टर दैट विल बी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट विल बी export, and final will be the import. So in place of that consumption, it is autonomous and induced both. Now explain it further. ठीक है, बेसिक पे ध्यान देना because weightage 35 marks है, all will be depending upon that basic concept. So I said y equal to C plus I plus G plus X minus M, and then divided all part into two, autonomous and induced. C was C bar plus small c y. Next term is investment. I am saying investment is I bar only. It means what? It is only a function. It is not a function of income. It is only. तो पहली बार याद रखना, जो रीडिंग के अंदर एक्सप्लेन किया गया पहले मैं वो बोल रहा हूँ. ये जरूरी नहीं है कि पेपर के अंदर भी वैसा ही हो. डू नॉट नेसेसरी. सपोज क्वेश्चन कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ इनकम, देन तो फिर आप आई बार प्लस करके एक वेरिएबल क्रिएट करोगे. इफ आई से इन्वेस्टमेंट इज ओनली ऑटोनॉमस, देन आई इज इक्वल टू आई बार. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओनली ऑटोनॉमस, जी बार. एक्सपोर्ट ओनली ऑटोनॉमस, एक्स बार. Import autonomous and induced both.
ऑटोनॉमस दिस, इंड्यूस्ड स्मॉल एम वाई, इस स्मॉल सी को क्या बोला, स्मॉल सी एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सो व्हाट इज दिस स्मॉल एम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट. ठीक है, एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो वहां से आप बाकी डिराइव कर सकते हैं. इट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट एंड व्हाट इट विल मेजर, change in import due to change in income. Now focus here. You can say sir आपने export तो सिर्फ autonomous ले लिया but import autonomous और induced दोनों ले रहे हैं. तो why this different treatment of export and import? Why we consider only export as autonomous and import autonomous and induced both? I will explain that. Remember, ये जो इक्वेशन लिखा गया, ये इक्वेशन किस कंट्री के लिए है, किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए होगा. ये जीडीपी किस स्पेसिफिक कंट्री का है, ये स्पेंडिंग कंट्री के लिए. मान लेते हैं कि ये इक्वेशन हमने इंडियन इकोनॉमी के लिए लिखा हुआ है. तो इंडिया में जब इनकम बढ़ेगी तो इंडियन रेजिडेंट की स्पेंडिंग भी बढ़ेगी. एज आवर इनकम विल इंक्रीज वी कैन स्पेंड मोर. व्हेन वी स्पेंड मोर वी कैन बाय मोर ऑफ डोमेस्टिक गुड आल्सो एंड वी कैन बाय मोर ऑफ फॉरेन गुड आल्सो. तो हमारी स्पेंडिंग इनकम अगर बढ़ती है तो फॉरेन गुड्स का परचेज भी बढ़ेगा. बट जो फॉरेन गुड हम बाई कर रहे हैं वो इंपोर्ट है. जिस फॉरेन गुड को आपने बाई किया वो इंपोर्ट है. वो इंपोर्ट फॉरेन कंट्री के लिए क्या है. तो कैन आई से दैट देयर एक्सपोर्ट डिपेंड्स अपॉन आवर इनकम. देयर एक्सपोर्ट डिपेंड्स अपॉन आवर इनकम. ओनली व्हेन आवर इनकम विल इंक्रीज वी कैन बाई मोर. So their export depends upon, so our export depends upon their income. So export also depends upon income, but which income? Income of the other countries, and we are not referring that other country here. Export भी income का function है, but किस income का function होगा वो? It will be a function of income of other countries. So in that way we consider export only as autonomous. It does not depend upon our income. Import depends upon our income, but export does not. So different treatment clear है, कोई पूछ नहीं रहा. But since आपको मैक्रो अभी स्टार्ट किया, पढ़ना आगे भी है, तो you must know that why we treat differently export and import. So exports only autonomous, import autonomous and induced both. Clear? Now आप कहोगे कि सर यूनिट तो आपने लिख रखा है क्लोज्ड इकोनॉमी इन शॉर्ट रन. क्लोज्ड इकोनॉमी, तो क्लोज्ड इकोनॉमी में व्हाई वी आर डिस्कसिंग व्हाट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, बिकॉज क्वेश्चन विल आल्सो डिस्कस. सिलेबस के अंदर तो क्लोज लिखा हुआ है बट क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट रहेंगे. सो यू मस्ट नो हाउ टू ट्रीट दैट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस वन मोर. whether you consider economy closed or open, in both cases there will be a government sector, and if government is present you have to consider three variables. One is government expenditure, और ये जी से डिनोट कर रहे हैं और इसको हमने ऑटोनॉमस माना है. जी इज ओनली जी बार. But if government is there, there will be taxes also. Tax depends upon income or not? Which tax depends upon income? Income tax. Whether all tax depend upon income? No. So those taxes which do not depend upon income, you have to call them, या दो ही वर्ड यूज कीजिएगा, ऑटोनॉमस और रिड्यूस्ड. तो जो इनकम का फंक्शन नहीं होगा वो, और जो इनकम का फंक्शन है वो, तो आप खुद से इक्वेशन बना के बताओगे क्या लिखें. टी इक्वल टू व्हाट, जस्ट जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखते जाइए. टी इक्वल टू व्हाट, ये ऑटोनॉमस भी है इंड्यूस भी है, तो ऑटोनॉमस टी बार हो गया और इंड्यूस स्मॉल टी वाई हो जाएगा. सो टी इज इक्वल टू टी बार प्लस स्मॉल टी वाई. सो टी इज टी बार प्लस स्मॉल टी वाई. And the third variable is government transfers. Government transfers like old age pension, unemployment benefits, scholarships. These are transferred from government to
हाउस होल्ड। ट्रांसफर को बुक में टी आर से लिखा हुआ है, बट मैं सिंप्लीफाई सिर्फ आर से लिख रहा हूं, और आर को सिर्फ क्या मान रहे हैं, ऑटोनॉमस माना है। अगेन अगर क्वेश्चन में आपको लिख के दिया जाए कि ट्रांसफर्स आर आल्सो अ फंक्शन ऑफ इनकम, देन हाउ यू विल राइट, आर बार प्लस स्मॉल आर वाई कर दीजिएगा, ठीक है। जो टर्म यू आर फ्री टू यूज दैट एनी टर्म, सो यू कैन यूज दैट ट्रांसफर एज आर बार प्लस स्मॉल आर वाई, बट राइट नाउ वी कंसिडर ट्रांसफर एज ओनली ऑटोनॉमस, टैक्स एज ऑटोनॉमस इंड्यूस, बोथ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओनली autonomous. Given these three terms, what is the meaning of disposable income? When I say disposable income, so what is my disposable income or household disposable income? Disposable income is that income which is left after paying taxes. So if you pay that tax, your disposable income get reduced. But if you receive transfer, then it increases. So minus tax plus transfer. So disposable income is income minus tax plus transfer. ये किसके disposal पे है, household के disposal पे है. And what is the use of that disposable income? What is the use of that disposable income? What household will use with that disposable income? टैक्स देने के बाद जो इनकम मेरे पास बच गया, उसका मैंने क्या यूज किया, या तो खर्च किया उसको या सेव किया. सो डिस्पोजेबल इनकम will be either spent on consumption or it will be saved. It is either spent on consumption or it will be saved. So can I say consumption is a function of disposable income? It is a function of disposable income. But हमने सबसे पहले उस फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा है, C equal to what, C bar plus small c y. टेक्निकली क्या होना चाहिए, YD होना चाहिए. तो वहां करेक्शन कीजिए, YD कीजिए. कंजम्पशन किसका फंक्शन है, कंजम्पशन किसका फंक्शन है, डिस्पोजेबल इनकम का. क्वेश्चन में अगर ना दिया जाए तो भी ऐसे, इट इज योर ड्यूटी, आपको वो करेक्ट करना है. कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम. सो इन प्लेस ऑफ दैट Y राइट हियर YD. ठीक है. अब मैं कोई न्यू टर्म नहीं बोलने जा रहा. पहली क्लास के अंदर मैंने कंजम्पशन लिखा है, इन्वेस्टमेंट लिखा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लिखा है, टैक्स लिखा है, ट्रांसफर लिखा है, एक्सपोर्ट लिखा है और इंपोर्ट लिखा है. कंजम्पशन ऑटोनॉमस इंड्यूस दोनों लिया है, इन्वेस्टमेंट ओनली ऑटोनॉमस लिया है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ओनली ऑटोनॉमस लिया है, एक्सपोर्ट ओनली ऑटोनॉमस लिया है, इंपोर्ट ऑटोनॉमस इंड्यूस्ड बोथ लिया है, टैक्स भी हमने ऑटोनॉमस और इंड्यूस बोथ लिया है. क्लियर. Autonomous means it does not depend upon income. It may depend upon some other factor like rate of interest. But right now we are not talking about that. हम अभी उस rate of interest को discuss नहीं कर रहे. In that way we consider it autonomous. Autonomous means it is not guided by income. It does not depend upon income. Independent from income है, बस that's it. और कुछ नहीं factor बोलना अभी. Independent from income है. जैसे सिंपल आर्गुमेंट होता है, ये माइक्रो इसलिए पहले पढ़ाया जाता है. माइक्रो बेसिकली मैक्रो का बेस होता है. दैट इज व्हाई यू स्टडी माइक्रो फर्स्ट एंड मैक्रो लेटर. बट यू राइट डिमांड इक्वेशन. माइक्रो में डिमांड फंक्शन कैसे लिखते हैं, माइक्रो के अंदर जब डिमांड इक्वेशन लिखना होता है तो माइक्रो में डिमांड इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इसको कॉपी नहीं करना. क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ दैट. अगर एक्स कमोडिटी लिया तो इसका प्राइस है. It is also a function of price of Y. It is also a function of income, function of taste and preference and so on. अब जब डिमांड कर्व ड्रॉ करने की बारी आती है तो कितने फैक्टर ऑफ एक्सेस पे लिखते हो. यहां हमने क्वांटिटी लिया और यहां why you take price, why we take price. फैक्टर तो बहुत सारे थे, प्राइस ही क्यों लिया, बिकॉज प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. प्राइस इज द मोस्ट important factor. Similarly, investment also depend upon various factors, but interest rate will be the most important factor among them. तो हमने बाकी सारे फैक्टर को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लिया. तो कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट, यू ड्रॉ दैट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. तो कंजम्पशन में इनकम इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट इन्वेस्टमेंट में इनकम इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है. इट वी विल कंसीडर, ये नेक्स्ट चैप्टर में मॉडिफाई हो जाएगा जो मैं कह रहा हूं. इन्वेस्टमेंट का इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगा, बट
नॉट इन दिस फर्स्ट क्लास। अब एक काम करना, आप जितने भी इक्वेशन आपने इस टाइम में लिख रखे हैं उनको एक जगह लिखिए अभी, प्रेफरेबली टेक अ फुल पेज एंड ऑल दोज फंक्शंस लेफ्ट साइड कॉर्नर में लिख दीजिएगा। लाइक कंजम्पशन का इक्वेशन क्या लिखा है हमने, सी बार प्लस स्मॉल सी वाई डी। टर्म क्लियर हो रहा है, क्या पढ़ना है इसको, व्हाट इज स्मॉल सी एंड व्हाट इज वाई डी, डिस्पोजेबल इनकम। एवरीबॉडी, डिस्पोजेबल इनकम, इनकम माइनस टैक्स प्लस ट्रांसफर। उसके नीचे लिखे इन्वेस्टमेंट वी आर कंसिडरिंग ओनली ऑटोनॉमस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओनली ऑटोनॉमस, एक्सपोर्ट ओनली ऑटोनॉमस, import autonomous and induced both, tax autonomous and induced both, transfer only autonomous. And what is the meaning of disposable income? Income minus tax plus transfer. Suppose क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ, कोई वैल्यू गिवन नहीं है, ये फंक्शन गिवन है एज इट इज, एंड आई से कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, वी हैव टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फ्रॉम दिस. So to calculate equilibrium level of income, equilibrium level of income, to calculate equilibrium level of income, I said you have to equate income with spending. income की जगह क्या लिखेंगे y, spending की जगह क्या लिखोगे ad, और ad के कंपोनेंट क्या है c plus I plus g plus x minus m. Now one by one substitute these numbers here, एक एक करके वहां लिखते जाइए. c bar plus small c yd, and in place of yd I write y minus t plus r. ये हो गया कंजम्पशन. c bar plus small c, in place of yd it is y minus t plus r. ठीक है, अभी ने एक्सपो यहाँ नहीं लेना अनलेस क्वेश्चन ने नहीं बोल रखा. कंसेप्ट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम इज फॉर हाउस होल्ड पॉइंट ऑफ व्यू. import can be done by firm also, import can be done by government also, unless question will not say I will not take. क्वेश्चन कह रहा है तो फिर क्वेश्चन के आगे फर्दर क्वेश्चन नहीं करना. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट में सिर्फ वाई लेना, बट कंजम्पशन में डिस्पोजेबल इनकम लिया. मतलब फर्स्ट पर्पस आपका ये है कि जो चीजें एज इट इज एक्सप्लेन की गई रीडिंग में पहले आप वो कर लो, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा उसको. ठीक है, तो डोंट मॉडिफाई ऑल एट द बिगनिंग. देन इन प्लेस ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हाट वी हैव टू राइट, आई बार. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, एंड इन प्लेस ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट की जगह माइनस एम बार माइनस स्मॉल एम वाई, माइनस एन के साथ. देन वाई इक्वल टू सी बार प्लस एक्सपैंड की जगह से सी वाई माइनस स्मॉल सी टी प्लस स्मॉल सी आर. ट्रांसफर वी हैव टेकन ओनली ऑटोनॉमस, आई बार प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम माइनस स्मॉल एम वाई. ठीक है, किस स्टेप में कोई डाउट हो प्रॉब्लम हो तो वहीं बताइएगा. एक्सपैंड करते समय सारे टर्म हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, कोई रह गया? ऑल टर्म सब्स्टिट्यूटेड देयर? नो. इस टी की जगह क्या लिखना है? टी इज बेसिकली दिस फंक्शन, टी इज टी बार प्लस स्मॉल टी वाई. नहीं, क्यों का लॉजिक नहीं है. क्यों का मतलब है कि वो इंपॉर्टेंट ट्रांसफर्स आर बीइंग पेड बाय द गवर्नमेंट. So now whether government will pay more transfer or less transfer, that does not depend upon GDP. Government has to pay, say, let us say old age pension.
Government cannot say that when GDP will increase, then I will pay old age pension. Government has to pay scholarship. Government cannot say that once GDP will increase, I will pay more scholarship. So in that way, we consider them as independent from income. In that way, we consider them independent from income. Now substitute that tax in place of this T. T की जगह substitute कीजिएगा. Consider करते हैं. Don't add all variable here. Don't variable all. I said weightage काफी ज्यादा. It will take enough time. आपके पास enough time है modify करने के लिए. First जो डॉनबुश कह रहा है, डॉनबुश फिशर में जो लिख रखा है, ऑब्वियसली आप जो भी सोच सकते हो, ये डॉनबुश भी सोच सकता था. ठीक है, तो डोंट अंडरस्टिमेट देयर इंटेलेक्ट, कि उसके दिमाग में ये आया ही नहीं कि बाहर से ट्रांसफर आ सकता है. उसने बुक लिख दी और दिए में पढ़ाया जा रहा है. ठीक है, देयर मस्ट बी सम लॉजिक. तो पहले आप उस लॉजिक को फॉलो कर लो, देन इंट्रोड्यूस. सी बार प्लस स्मॉल सी वाई माइनस स्मॉल सी. इन प्लेस ऑफ टी आई राइट टी बार प्लस स्मॉल टी वाई. ठीक है, ध्यान देना, ये काम आपको एक बार करना है, बट एक बार स्टेप अगर क्लियर होगा तो लेटर ऑन किसी भी टॉपिक में फिर फर्दर प्रॉब्लम नहीं है. देन यू राइट सी आर, देन आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम माइनस स्मॉल एम वाई. डन. एक्सपेंड दिस. The next step. So y is c bar plus small c y minus small c t minus small c into small t y plus small c r plus I plus g plus x. अब ये आप ध्यान देना, जितने भी टर्म यहाँ लिखे जा रहे हैं राइट साइड, ये दो ही तरीके के हैं, ऑटोनॉमस हैं या इंड्यूस है. कौन कौन से टर्म ऑटोनॉमस आइडेंटिफाई कर सकते हो? वो सारे टर्म जहाँ पे इनकम नहीं होगा वो सारे ऑटोनॉमस हो गए, और जहाँ जहाँ इनकम है वो इंड्यूस हो गया. तो बाद वाले चैप्टर में क्या करेंगे, जितने ऑटोनॉमस टर्म है उन सबको क्लब करके सिर्फ लिख देंगे ए ऑटोनॉमस के लिए, ए बार. सो ऑल ऑटोनॉमस विल बी क्लब, बट अभी यहाँ क्लब नहीं करना है. यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर वाई. तो y वाले जितने भी टर्म राइट साइड है उसको क्या कर लो, लेफ्ट साइड कर लीजिए एंड टेक y कॉमन एंड देन सॉल्व इट फॉर y, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट इनकम. सो इफ यू हैव टू कैलकुलेट इनकम, वन टर्म विथ y इज दिस, वन टर्म इज दिस एंड वन टर्म इज दिस. ठीक है, ये तीन टर्म लेफ्ट साइड करना. सो इट विल बी y माइनस सी वाई. ठीक है, प्लस स्मॉल सी टी वाई प्लस स्मॉल एम वाई इज इक्वल टू सी बार माइनस स्मॉल सी टी बार प्लस स्मॉल सी आर. जितने भी ऑटोनॉमस है वो सारे राइट साइड बच गए. ठीक है, टेक y कॉमन. सो 1 माइनस सी प्लस सी टी प्लस एम इज इक्वल टू सी बार माइनस सी टी बार प्लस सी आर प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. देयरफॉर y इक्वल टू, y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? फिर उस टर्म को इस टर्म से क्या करना है, डिवाइड कर देना. y आपने यहाँ कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1 माइनस सी प्लस सी टी प्लस एम हो गया, और y के लिए सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू राइट साइड जाकर के डिनोमिनेटर में. सो y इज इक्वल टू सी बार माइनस सी टी बार प्लस सी आर प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाई 1 माइनस सी प्लस सी टी प्लस एम, एंड दिस इज योर आंसर. ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम की वैल्यू ये होगी. दिस इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. If these are the function, this will be your answer. In fact, you have derived formula. आपने फॉर्मूला डिराइव किया है. इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले को आपने डिराइव किया.
पेपर में जनरल टर्म में नहीं होगा, वहाँ वैल्यूज होंगे, नंबर होंगे। नंबर होंगे तो एक न्यूमेरिकल नंबर आएगा आंसर में, 500 700 कोई वैल्यू आएगी, बट वो वैल्यू कैलकुलेट करने का मेथड क्या करना है आपको फॉलो, ये तरीका निकाल। बट ये फॉर्मूला यूज करने के लिए पहली बात तो याद होना चाहिए, तभी आप उसको अप्लाई कर लोगे डायरेक्टली। अगर यूज करना हो तो फॉर्मूला याद हो गया, y इक्वल टू वट, सी बार माइनस सी टी बार प्लस सी आर प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम अपॉन 1 माइनस सी प्लस सी टी प्लस एम। आई रिपीट, y इक्वल टू सी बार माइनस सी टी बार प्लस सी आर प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम अपॉन 1 माइनस सी प्लस सी टी प्लस, डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर हैं वो सारे फ्रैक्शन वाले हैं, स्मॉल सी स्मॉल टी स्मॉल एम डिनोमिनेटर वाले। एक दो प्रॉब्लम करोगे वैसे याद हो जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले को यूज तभी करेंगे जब फंक्शंस ऐसे ही दिए हों। अगर कोई नया फंक्शन हो तो फिर तो डिराइव करोगे आप। मान लो ट्रांसफर की जगह सिर्फ ये आर बार लिखा हुआ नहीं है, प्लस करके स्मॉल आर वाई भी लिखा हुआ है, तो फिर वो स्मॉल आर भी तो आएगा इक्वेशन में। तो मुझे ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब फंक्शन इसी ऑर्डर में गिवन होंगे तो यूज करेंगे, अदरवाइज हमेशा यूज नहीं करना। तो बेटर वे, जो भी फंक्शन गिवन हो आप उसको डिराइव करके सॉल्व कर दो, कभी एरर नहीं होगा, मिस्टेक नहीं होगा। तो ये एक्चुअल में इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैलकुलेट किया। दिस विल बी फर्स्ट पार्ट ऑफ एनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। कोई भी न्यूमेरिकल होगा उसको सॉल्व करने का ये पहला पार्ट होगा। अब आप एक करके बताओ कि अगर इनमें से कोई नंबर चेंज हो जाता है तो इनकम में कितने का चेंज आएगा। मान लो मैं कहूं कि इन्वेस्टमेंट राइजेस बाय 100, तो इनकम में कितने का चेंज आएगा। क्या पूरा री एक्सरसाइज करेंगे दोबारा या कोई शॉर्टकट हो जाएगा। आई एम सेइंग चेंज इन इन्वेस्टमेंट बाय 100, देन हाउ मच इज चेंज इन इनकम। मैंने जो पूछा उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं पूछ रहा हूं चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। थिंक मैथमेटिकली, मैथ्स इसलिए पढ़ते हैं सो दैट माइक्रो मैक्रो में यूज कर पाओ। थिंक मैथमेटिकली ऐसे, थिंक मैथमेटिकली मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन। तो इस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर ले, आई बार के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे आई बार के रिस्पेक्ट में कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, देन व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट। ये भी तो वही मतलब हो रहा है ना, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन दिस, सो इट इज dy बाई di। सो कैन यू डिफरेंशिएट इट। सारे फैक्टर कांस्टेंट है, उसका डेरिवेशन 0 हो गया। आई बार का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये नंबर रह जाएगा। तो इस इक्वेशन के लिए क्या लिखें बोलो, आई बार का डेरिवेटिव 1 हो गया, बाकी सबका तो 0 हो गया। सो इट विल बी 1 अपॉन 1 माइनस सी प्लस सी टी प्लस एम। और ध्यान देना यहाँ जो नंबर लिखा जा रहा है इस नंबर को मैक्रो में मल्टीप्लायर कहेंगे। और कौन सा मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है ये, ठीक है। दिस नंबर इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, क्लियर। दिस नंबर इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगर मैं कहूँ क्लोज इकोनॉमी मल्टीप्लायर कितना है तो क्या बोलना है, क्लोज इकोनॉमी। क्लोज करेंगे तो ये इंपोर्ट वाला टर्म हटा देना, क्या बच गया सिर्फ 1 माइनस सी प्लस सी टी। गवर्नमेंट भी ना हो तो टैक्स भी नहीं रहेगा, फिर टैक्स भी नहीं रहेगा तो 1 बाई 1 माइनस एमपीसी। तो स्कूल लेवल पे वैसे मल्टीप्लायर पढ़ते थे 1 बाई 1 माइनस एमपीसी, बहुत सिंप्लीफिकेशन होता था। आप इग्नोरिंग टैक्सेस इग्नोरिंग इंपोर्ट एक्सप्लेन करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू ये है, क्लियर है। Just as you have calculated investment multiplier, there are various forms of multiplier. You can calculate government multiplier, you can calculate tax multiplier. So how to calculate government multiplier? Apply करो, change in income due to change in what? G करना है। तो अगर मैं G बार के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, सेम ही आएगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और गवर्नमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और गवर्नमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू सेम है।
अगर मैं कहूं चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन टैक्स, आप जरा ध्यान से बता रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में करना है, ये टी बार के रेस्पेक्ट में, तो ये माइनस ही रहेगा ऊपर अपॉन दिस नंबर, एंड दैट मल्टीप्लायर विल बी कॉल्ड टैक्स मल्टीप्लायर. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैक्स मल्टीप्लायर? इक्वेशन लिखिए, टैक्स मल्टीप्लायर इज इक्वल टू व्हाट? माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी प्लस सी टी प्लस एम, एंड दिस विल बी नोन एज, मल्टीप्लायर को अल्फा से डिनोट कर रहे हैं, टैक्स मल्टीप्लायर डिनोट मल्टीप्लायर बाय अल्फा से. ठीक है, व्हाट इज ट्रांसफर मल्टीप्लायर देन? मैंने आपको एक लिंक हिंट दिया है, अब आप कोई भी मल्टीप्लायर बता सकते हो वहां से. ट्रांसफर मल्टीप्लायर निकालने के लिए किस रिस्पेक्ट में करना है? आर के रिस्पेक्ट में किया है, तो आर के रिस्पेक्ट में करने पे क्या रह जाएगा? सी अपॉन दैट. तो ट्रांसफर मल्टीप्लायर इज इक्वल टू, ट्रांसफर मल्टीप्लायर विल बी इक्वल टू सी अपॉन, सी रह गया यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफर के रिस्पेक्ट, सी अपॉन 1 माइनस सी प्लस सी टी प्लस एम. लिख लिया? इन सब इक्वेशन का मतलब एक्चुअल में ये हो जाता है कि अगर मेरे से कभी इनकम का चेंज पूछा जाएगा ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा आई अपॉन 1 माइनस सी प्लस सी टी प्लस एम. ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज दिस नंबर, तो आप ये डेल्टा आई की वैल्यू यहां लिख दीजिए बस. तो उस फॉर्मूले से क्या कैलकुलेट हो जाएगा? चेंज इन इनकम बिकॉज ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम बिकॉज ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट. दो फैक्टर एक साथ भी चेंज हो सकते हैं, तो दोनों अगर एक साथ चेंज होंगे तो दोनों को क्या करोगे आप? ऐड कर दीजिएगा चेंज. बट ये सब याद तभी होता है जब आप उसको एक वैल्यू के अंदर पुट करके कैलकुलेट कर लो तो याद हो जाएगा. तो बुकलेट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है, चैप्टर के बैक में भी होंगे और इस बुकलेट के अंदर भी. इस बुकलेट में याद रखिए रीडिंग के जो भी बैक के क्वेश्चन होंगे वो अवेलेबल है, एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, तो आपको 10 ईयर बाई करने की जरूरत नहीं है, 10 ईयर वाले क्वेश्चन होंगे. एंड आई हैव एडेड सम न्यूमेरिकल ऑन दैट ISLM एट द एंड, क्योंकि वो यूनिट नंबर 4 में है. सो जस्ट डू वन थिंग, solve this question number 2 only, one question. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 69 पे. ठीक है, सिर्फ कंजम्पशन को फंक्शन को कॉपी कर लीजिए. C इक्वल टू 150 प्लस 0.75 ID, C equal to 150 plus 0.75 ID. So what is 150? C bar and 0.75 MPC है, small c की जगह आ गया. I bar is 100, R bar is 40, X bar is 35, M is 15 plus 0.1 Y. So 15 is M bar and 0.1 is small m. G bar is 115, tax is 20 plus 0.2 Y. And then you have to calculate first equilibrium level of income. इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है उसके बाद सबसे पहले. अब या तो आप पूरा का पूरा लेंदी प्रोसेस करो, या फिर टाइम अगर सेव करना है तो डायरेक्टली क्या यूज कर लें, फॉर्मूला जो लास्ट में लिखा था वो देख करके एक बार कॉपी करके सॉल्व कर लीजिए. 69. ठीक है, कर लिया कॉपी? डन. ठीक है, मैं यहाँ फंक्शन लिख दे रहा हूँ और फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करना है.
इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, यू हैव टू कैलकुलेट y फर्स्ट, और y कैलकुलेट करने के लिए C बार माइनस सी टी बार प्लस सी आर प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाई 1 माइनस सी प्लस सी टी प्लस एम, ये फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। एक एक करके वैल्यू बताइएगा। सी बार की वैल्यू कितनी होगी? 150 माइनस 0.75 इंटू टी बार 20 प्लस 0.75 इंटू आर बार, ट्रांसफर वाज 40, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट एंड व्हाट इज एम बार 15, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एम पी सी इज 0.75 प्लस 0.75 इंटू स्मॉल टी इज 0.2 एंड प्लस स्मॉल एम इज 0.1, ठीक है। सब्स्टिट्यूट किया तो ये नंबर आ रहा है। अब इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैलकुलेट कर लीजिए। डिनोमिनेटर हो गया 1 माइनस 0.75 इज 0.25 0.35 एंड व्हाट इज दिस 0.75 इंटू 0.2 0.15 0.15 so denominator is 0.5, ठीक है। अब कैलकुलेशन, if you are doing it correctly it must be 400, so how much is income? 800, first part solved, A part, रुपीज लिखोगे, इनकम है, सारे एक्सपेंडिचर होंगे, ये सब मॉनेटरी टर्म में गिवन होते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन वाज consumption at equilibrium level of income. Consumption at equilibrium level of income, that means you have to calculate what? But remember C depends upon which number, and you have calculated which number? Income. So first you have to calculate what? Disposable income, then use this formula. Clear? Consumption is a function of disposable income. आपने जो निकाला है वो disposable नहीं है, वो income है। So consumption is equal to 150 plus 0.75 YD, ये फाइंड करना है, where YD is income minus tax plus transfer। इनकम की जगह 800 लिखेंगे, टैक्स की जगह क्या लिखोगे? टैक्स की जगह पूरा फंक्शन लिखना है, टैक्स की जगह कंप्लीट फंक्शन लिखना है। फंक्शन का मतलब है 20 प्लस 0.2y, इट इज 20 प्लस 0.2y और y की जगह 800 आ गया, प्लस ट्रांसफर 40। पहले ये नंबर बताइएगा। 800 माइनस टैक्स प्लस ट्रांसफर, ठीक है। हाउ मच? 180 पूरी वैल्यू, हाँ 660। इंटायर डिस्पोजेबल इनकम इज 660, ये ठीक है। देन सब्स्टिट्यूट दैट 660 हियर, 0.75 इंटू 660, दिस विल बी योर आंसर। दिस वैल्यू विल बी 645। सेकेंड पार्ट आंसर इज दिस। पहले डिस्पोजेबल इनकम निकाला है, डिस्पोजेबल इनकम को फंक्शन में पुट कर देंगे तो कंजम्पशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
B part. Third part says calculate net export. So what is the meaning of net export? Export minus import. Export value is 35 and how much is import? Import is a function of income. So import was given as 15 plus 0.1 y and y is 800. So this is 80 plus 15, 95, 35 minus 95 minus 60. बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाए या नेट एक्सपोर्ट कहा जाए, x माइनस m कीजिएगा. क्लियर. नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट, रीड दैट क्वेश्चन फर्स्ट. फोर्थ एंड फिफ्थ. बाय हाउ मच वुड इक्लम इनकम चेंज इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 50. मतलब क्वेश्चन ने क्या क्या रखा है, इन्वेस्टमेंट का चेंज हो गया 50, तो मुझे क्या निकालना है, चेंज इन इनकम निकालना है. तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे. ठीक है, इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर लो. डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करने का मतलब इनकम का चेंज कैसे निकाल रहे हैं, चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन 1 माइनस सी प्लस सी टी प्लस एम. जस्ट सब्स्टिट्यूट द नंबर. इन्वेस्टमेंट का चेंज 50 हो गया और डिनोमिनेटर वी हैव कैलकुलेटेड एज 0.5, सो इट विल बी 100. डी पार्ट. Clear. In the last, increase in government spending required to ensure that economy reaches full employment income of 1200. Repeat. Increase in government spending required to ensure that economy reaches full employment income of 1200. So increase in government spending means we have to calculate change in G to reach full employment income of 1200. And how much is the income right now? So how much change is required? So change in income is given here 400. For that purpose how much should be the change in गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. तो अगर इनकम में 400 का चेंज करना है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कितने का चेंज रिक्वायर्ड होगा. यूज द सेकंड फॉर्मूला, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर वाला. यू कैन से चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल बी दिस. चेंज इन इनकम रिक्वायर्ड इज 400. डेल्टा जी वी हैव टू कैलकुलेट एंड डिनोमिनेटर इज 0.5. Therefore, change in government expenditure will be 200. ठीक है. ये क्वेश्चन मैंने केयरफुली आपको पहले दिया था. इसमें सारे फंक्शन वैसे ही थे जैसे मैंने क्लास में आपको बताया. पेपर में जरूरी नहीं कि सारे फंक्शन वैसे ही हो जैसे बोली जा रही है. ये जस्ट फॉर्मूले को याद करने के लिए, लर्न करने के लिए. नो इन्फॉर्मेशन वाज मिसिंग देयर, नाइदर एनी डिफिकल्टी वाज देयर. टू स्टेट क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते. ठीक है, वो प्रैक्टिस करने के लिए करा. वैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं. क्वेश्चन वहाँ आईएस और एलएम कप के टर्म में होगा. तो आईएस कप की बात अभी नहीं हुई है. वी हैव टू ऐड मोर एंड मोर वेरिएबल नाउ. रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह भी कंसिडर नहीं कर रखा है. बट जो इनिशियल क्वेश्चन है बेस्ड अपॉन फर्स्ट क्लास, यू कैन अटेम्प्ट फर्स्ट 10 क्वेश्चन. सेकेंड आपने इसमें सॉल्व कर लिया जो पेज नंबर 16 से स्टार्ट हो रहा है. तो घर जाके आप पहले ये क्वेश्चन कीजिएगा, जो नहीं बनेंगे वो मैं सॉल्व करूंगा, बट आप ट्राई करके आओगे. पहले क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट डू दैट. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, 5 to 8 ये भी बन सकता है. 10th क्वेश्चन तक आप ट्राई कर सकते हो. ठीक है, 10th क्वेश्चन तक यू कैन ट्राई. ठीक है, आउट ऑफ 10 आई हैव गिवन यू जस्ट सॉल्व 1 पार्ट. जितने पार्ट आपसे बनते हैं ओके, नहीं बनते हैं वो क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे. सो बेस्ड अपॉन दैट, बट अप टू दैट इज टॉपिक आईएस एलएम का, बट हमने अभी आईएस कब नहीं पढ़ाया रखिएगा. आईएस कब सब्सिक्वेंटली होना है. तो इसकी कंटिन्यूटी में क्लास रहेगी. इसमें टॉपिक के अकॉर्डिंगली समझिएगा. वी हैव स्टार्टेड विद यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 4 में इस चैप्टर नंबर 9 इनकम एंड स्पेंडिंग. अगर आपको पहले करना है या अर्ली करना है या कॉलेज का कुछ रिक्वायरमेंट है तो ऑनलाइन एक्सेस ले लीजिएगा पहले.
जैसे अगर आपका फर्स्ट यूनिट के अंदर आ रहा है तो वो वाली क्लास में ट्राई करूँगा कि जितनी क्लास लास्ट ईयर सेमेस्टर वाली थी वो पूरी की पूरी अपलोड हो जाए, सो दैट अगर आपको अर्ली करना है यहाँ पे हम वैल्यू एडिशन करते रहेंगे, इन द सेंस कोई न्यू क्वेश्चन होगा वो ऐड करते रहेंगे, क्लास दोबारा से अगर आपको समझना है उस पर्पज़ के लिए आप आते रहो यहाँ पे। बट इफ़ यू वांट टू स्टडी एट अ फास्टर पेस तो फिर आप एक्सेस लेकर के उस पर फास्टर पेस से पढ़ सकते हो।